I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1. So dear students, yes, in this video tutorial we are going to see one of the important and very interesting topic of pharmacognosy, that is hallucinogenic plants. As you can see in the screen, what was happening here? Yes, a dreamlike state might appear. It affects our mind. Please see the syllabus. Unit number 5. The topic we are going to cover in this video is the hallucinogens. As you can see in Hindi, hallucinogens are known as the भ्रांतिजनिक औषधि. जिन औषधियों को खा के हमें भ्रांति हो जाए, एक मिथ्याभास, एक अलग ही दुनिया में इंसान पहुंच जाए. The agent which cause hallucinations. What are hallucinations? Hallucinations are the sensory experiences that appear real but are created by your mind. अगर कोई इंसान हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स कंज्यूम कर ले तो उसको कुछ ऐसी परसेप्शंस होंगी, ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो रियलिटी में नहीं होंगी, लेकिन उसके माइंड द्वारा वो क्रिएट की गई होंगी. जस्ट लाइक अ डेलीरियम, लाइक ड्रीम लाइक स्टेट. तो व्हाट इज डेलीरियम? इट इज एन अब्रप्ट चेंज in the brain that causes the mental confusion and emotional disruption. Yes. What are hallucinogens now? These are the class of the drugs that cause hallucinations. That means they cause profound distortion in the person's perceptions of the reality. Reality change हो जाएगी एक अलग ही दुनिया में. Hallucinations can be found in some plants. Means अब हमने which is the most accepted system of classification. सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्रूड ड्रग का केमिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो भी प्लांट में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट. तो मींस द प्लांट contains some hallucinogenic compounds that cause hallucinations, and these compounds might be found in some plants and also in some of the mushrooms, and can be now made in the laboratory, or synthetic or semi-synthetic derivatives have now been synthesized. Yes, there are a number of the common hallucinogenic plants like bhang, afim, ergot, dhatura or psilocybe. This is a mushroom. I hope you have seen this plant. आप सब लोगों ने ये प्लांट देखा होगा. Cannabis. तो yes, what is the common name? Indian hemp, ganja और marijuana. तो what is the biological source? It consists of the dried female tops of the cultivated female plant. Remember this thing, female plant. Cannabis sativa belonging to the family Cannabinaceae. चरस और गांजा हम दो टर्म्स यूज करते हैं. इस प्लांट से हम दो चीजें मेन इंक्लूड होंगी. चरस और गांजा दोनों अलग अलग हैं. व्हाट इज गांजा? गांजा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइंग, फ्लावरिंग और द फ्रूटिंग टॉप ऑफ द फीमेल प्लांट विद नो रेजिन हैज बीन रिमूव्ड. आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों को भांग मलते जरूर देखा होगा. इस तरह से हाथ से वो इस प्लांट को रगड़ते हैं, जिससे वो ब्लैक कलर का रेजिन सब्सटेंस निकलता है. तो भांग में गांजा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग फीमेल part or the flowering fruiting top of the female plant which no resin has been removed. इसमें resin नहीं निकलता. It is collected only from the cultivated plants. अब जो ये रबिंग की बात की वो चरस के केस में है. तो चरस is a resinous exudation collected from the leaves of the hemp plant. इसमें हम लीफ से obtain करेंगे क्या? चरस. The resinous secretion appear just before the flowering of the plant is collected by the rubbing the fresh tops between the hands. So this is the charas. So let's talk about the chemical constitution of the plants in the bhang. So it contains 15 to 20% of the resins present in the glandular trichome part, which majorly contain. भांग के अंदर क्या है? कैनाबिस नाम. तो कैनाबिस से मिलते जुलते कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? जैसे कि कैनाबिडायोल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, commonly known as delta THC, tetrahydrocannabinol, delta THC, and sometimes known as delta. This is the symbol of delta 8 THC, tetrahydrocannabinol, along with cannabidiolic acid, and it also contains 20% of the fixed oils. If we talk about the uses, it is used as a narcotic, sedative and analgesic. तो इसमें से हम जो कंपाउंड्स हैं इनका यूज क्या है? एज अ सेडेटिव एंड एज ए एनाल्जेसिक, एज अ पेन किलर हम इसमें से दवाइयां सिंथेसाइज करते हैं. इट हैज अ साइकोट्रोपिक प्रॉपर्टीज. यस,
it cause delirium or hallucination. That's why it is written as psychotropic properties due to presence of tetrahydrocannabinol, due to presence of this compound. Yes, this drug causes euphoria and mental disturbances. It should be taken under the prescription of a prescribed medical practitioner. Second drug we are having, afim, opium. The opium is obtained as a dried latex, yes, unorganized drug again. Dried latex obtained by incision from the unripe capsule of the plant. Plant name is Papaver somniferum. It belongs to the family of Papaveraceae. Yes, this is the latex which is exudated from this plant, that is opium. If we talk about the location, it is commonly found in India, Pakistan, Afghanistan, China, Iran and just like भांग हमने दो वैरायटीज देखी, चरस और गांजा, वैसे ही अफीम की अलग अलग वैरायटीज हैं. इंडियन ओपियम, पर्शियन ओपियम, टर्किश और यूरोपियन ओपियम एंड मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम. And there are two type of the chemical compounds, which are present in the opium, that belongs to the category of phenylalanine, which is obtained from the this amino acid phenylalanine type and tyrosine type. For example, benzyl isoquinoline and phenanthrin. अफीम में दो तरह के आपको मेन केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलते हैं. बेंजाइल आइसोक्विनोलिन टाइप के अल्कलॉइड्स हैं और फिनेंथ्रिन टाइप के अल्कलॉइड्स मिले देख. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो ऑफ दी ओपियम. एक अलग से ओपियम पे वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग वो देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज अ फिनेंथ्रिन टाइप ऑफ ओपियम अल्कलॉइड्स लाइक मॉर्फिन, कोडीन. तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मॉर्फिन एंड कोडीन. It contains phenanthrin ring. So this type of ring is the phenanthrin. Other compounds include narcotin, papaverine and heroin. Diacetyl morphine, okay, is heroin. What is morphine? Here it is given the structure of morphine. Here it is, okay, this is the morphine structure, and here it is the heroin, which is a diacetyl morphine. 2 acetyl group is present, and rest of the structure is same as that of morphine. So I request you again to watch the video of opium that I have previously made. सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको उस वीडियो में, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई गई है. तो पेपावरीन की बात करें, इट इज अ वीक मोनोएसिडिक बेस एंड इनएक्टिवली ऑप्टिकली इनएक्टिव. Whereas the other benzyl isoquinoline alkaloid, that is a narcotin, is a weak monoacidic base and is levorotatory, while salts are dextrorotatory. एक चीज आपको याद रखनी है, मैकोनिक एसिड. बेसिकली ओपियम एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैकोनिक एसिड. जस्ट सी, दिस इज अ मैकोनिक एसिड स्ट्रक्चर. और जनरली हीरोइन के डिटेक्शन के लिए हम मैकोनिक एसिड के रिंग का स्ट्रक्चर का केमिकल टेस्ट भी करते हैं. जनरल टेस्ट इज गिवन ओवर हियर. द जनरल टेस्ट टू डिटेक्ट ओपियम इज by the presence of meconic acid. The alkaloids are present as a salt of meconic acid. Yes, right. So opium is dissolved in the water. सबसे पहले opium लेंगे, water में dissolve करेंगे, and ferric chloride solution is added, which will with deep reddish purple is obtained, और वो रहेगा with persistent even on heating with hydrochloric acid. अगर ये reddish purple color आ जाए, that means it contain meconic acid derivative like heroin or other opioid analgesics or opioids. There is another simple test that morphine when sprinkled on nitric acid give orange red color, whereas codeine do not respond to this test. So let's talk about the uses now. The opium belong to the category of the hypnotic and sedative drug, and yes, it is used as a analgesic, but due to its central narcotic effect it cause addiction. Hence it is given only in severe pains and in those cases when patient does not respond to normal analgesic. अगर NSAIDs काम ना करें, normal analgesic काम ना करें, then we will go for the opioid analgesics like morphine, codeine or heroin. Another important point, morphine or opium alkaloids also stimulate the chemoreceptor trigger zone in the medulla and thereby leading to the causes nausea and vomiting. So nausea and vomiting is one of the most common side effect of opioids. I am using word opioid. opioid का मतलब क्या है? ओपियम के derived हुए alkaloids, ओपियम से derived हुए synthetic और semi synthetic और natural drugs.
that is opioids. If you talk about the codeine uses, codeine is also used as antitussive. So the codeine phosphate is also used in the cough syrup like Corex. As you can see, this is the cough syrup which contain codeine phosphate. So it is used as an antitussive cough center suppressant. Antitussive mean cough center suppressant, cough को suppress करे. Let's talk about Dhatura plant. As you can see the image, this is the Dhatura, commonly known as the angel's trumpet. Let's talk about the biological source. It consists of the dried leaves and the flowering tops. So which part of used? Dried leaves and the flowering tops of Dhatura metal and variety fastuosa, and it belongs to the family Solanaceae. So you just remember this name, Dhatura metal belong to the family Solanaceae. If you talk about the chemical composition of Dhatura, so it contain hyoscine, okay, 0.5% of total alkaloid, among which hyoscine is the main alkaloid, and its another form, that is L-hyoscyamin, scopolamine and atropine is also present, but in very less quantity. So this is the structure of the scopolamine. And what is hyoscine? It is the ester of tropic acid plus scopine. Don't worry, just remember this thing. It contains 0.5% of alkaloid, among which hyoscine is present, and also along with L-hyoscyamin. And of course atropine is there. So atropine is the main chemical compound which is also present, but in the less quantity. Please see the structure of atropine. And yes, different formulations are also available. Atropine is widely used in the form of parenterals or injectables. There is a chemical test also, Vitali-Morin reaction of detection of the tropine alkaloids. Don't worry, we will cover this in detail in the later part. If you talk about the uses of Dhatura, so it is mainly used as a parasympatholytic with anticholinergic. It is anticholinergic drug basically, and drug is also cause the cerebral excitement. It cause hallucinations also. And along with morphine, it is used as a pre-operative medication, and also in the treatment of the asthma and the cough. Hyoscine hydrobromide is used in the motion sickness, gastric or duodenal ulcers also. अब बेसिकली दिस इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एंटीकोलिनर्जिक्स क्या है इतना याद रखिए, विच डिक्रीजेज द बॉडीली सिक्रीशन. इसलिए वो अस्थमा में क्यों यूज होता है? क्योंकि अस्थमा में बॉडीली सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, म्यूकस वगैरह इंक्रीज होगा, तो उसको डिक्रीज करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग द एंटीकोलिनर्जिक्स. इन द सेम वे गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी अगर बॉडी सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है तो उनको डिक्रीज करने के लिए एंड वी आर यूजिंग द एंटीकोलिनर्जिक, जो कि बॉडी सिक्रीशंस को डिक्रीज करती है. इसलिए कई बार एंटीकोलिनर्जिक्स का एक साइड इफेक्ट भी है, एक मिनिमम, एक बहुत ही लेस साइड इफेक्ट, दैट इट कॉजेज द ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवरी सिक्रीशंस है एंटीकोलिनर्जिक्स लेने की वजह से वो भी डिक्रीज हो जाएंगी. तो इतना सी चीज याद रखिए. जैसे हायोसिन और हायोसाइमिन क्या है, दे आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द डिफरेंट terminal bowel obstruction by blocking the muscarinic receptor, and they may cause reduce the GI secretion and thereby relieving nausea, vomiting volumes of in that particular disease. तो बेसिकली डिक्रीज करते हैं बॉडीली सिक्रीशन, चाहे वो रेस्पिरेटरी की सिक्रीशन हो, चाहे वो हमारे जीआई या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की सिक्रीशन हो. तो क्या कौन डिक्रीज करता है? एंटीकोलिनर्जिक. एग्जांपल हायोसिन, हायोसाइमाइन, एट्रोपिन. So let's talk about ergot now. This is the ergot, this is the plant. Okay, this is basically ergot. पहले इसका biological source देखिए. So it is a dried sclerotum of a fungus. It is a dried sclerotum of fungus Claviceous purpurea belonging to the family Clavicipitaceae, developed on the ovary of the rye plant Saccharia. मतलब दो अलग अलग प्लांट्स हैं. एक फंगस हो गई जिसका नाम है क्लेविसस परपुरिया, और एक प्लांट है राई प्लांट. फंगस किसी न किसी जगह पे अटैक करती है, तो इस केस में वो राई प्लांट पे अटैक कर रही है. राई प्लांट का नाम क्या है? सैक्लेसेरेले. इसकी फैमिली है पोएसी. हियर इट इज, ये प्लांट है, राई का प्लांट है, इसका नाम है सैक्लेसेरेले, इसकी फैमिली क्या है? पोएसी. इस पे एक फंगस अटैच करेगी. फंगस का नाम क्या है? क्लेविसस परपुरिया, बिलोंगिंग टू द फैमिली क्लेविसिपिटेसी. तब इस प्लांट को हम बोलेंगे एर्गट. तब ये बन जाएगा एर्गट अगर इस पे फंगस अटैक करेगी, जिसका नाम है क्लेविसस परपुरिया. सी अगेन, तो एर्गट इज द ड्राइड स्क्लेरोटम ऑफ द फंगस. उस फंगस का स्क्लेरोटम पार्ट होगा
किस फंगस का? क्लेविसोस पर्पुरिया का। वो अगर किस प्लांट पे ग्रो करेगा? राई प्लांट पे। राई प्लांट का नाम है सैक्लेस सेरेले। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉमन नोन एज एरगट ऑफ राई. If we talk about the chemical constituents of ergot, a large number of the alkaloids have been isolated from it, and the most important alkaloids are ergonovin and ergotamine. और एक चीज़ याद रखिए, ergots की क्लासिफिकेशन जब आप लोग डिटेल में करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ergots के alkaloids को दो तरह से डिवाइड किया गया है, वाटर सोल्यूबल ergot alkaloids और वाटर इनसोल्यूबल ergot alkaloids. वाटर सोल्यूबल की अगर बात करें तो उसमें आएगा एर्गोमेट्रिन. ओके कौन सा आएगा? एर्गोमेट्रिन. और इनसोल्यूबल में आएंगे आपके जैसे एर्गोटामाइन, एर्गोसिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोकॉर्निन. तो ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर इनसोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल आपने याद रखना है एर्गोमेट्रिन, और बाकी सारे जैसे एर्गोटामाइन, एर्गोसिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन, ये वो सब क्या होंगे? वाटर इनसोल्यूबल एर्गट एल्कलॉइड्स. एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको याद रखना है एर्गट में, दैट इज LSD, lysergic acid diethylamide. This is very important compound because it is also used in the migraine treatment of the migraine, and it is a hallucinogenic drug. It causes hallucination. compound का नाम है LSD, that is lysergic acid. If we talk about the uses of the ergot, तो ergot is the oxytocic. अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज है? vasoconstrictor and abortifacient, and used to assist delivery and to reduce the postpartum hemorrhage. तो what is this oxytocic? It hasten childbirth. कैसे? oxytocic agent क्या करेंगे? It induce contraction of the uterine smooth muscle. okay? वो uterine smooth muscle contractions को induce करेंगे ताकि child birth hasten increase हो सके, उसके chances increase हो सके. That's why अभी हमने पढ़ा it is used to assist delivery. okay? कौन सा? ergot alkaloids. Next important compound, lysergic acid obtained, lysergic acid diethylamide, that is LSD-25, obtained by the partial synthesis from the lysergic acid, is a potent specific psychomimetic drug. So it is also used in the basically as a painkiller in case of migraine also. तो ergometrin is oxytocin and used in the delivery. okay, ये हमने भी कर लिया. एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सभी ड्रग्स हम ऐसे यूज नहीं कर सकते. अब LSD का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है, इट इंक्रीजेज द सुसाइडल टेंडेंसी इन पेशेंट्स. सुसाइडल टेंडेंसी इंक्रीज करने की टेंडेंसी है किसकी? LSD की. तो स्पेशल कॉशन शुड बी टेकन while consuming these drugs. So the last drug is the psilocybe. As you can see, this is a mushroom. Psilocybe mexicana is the name. So it is known by Northern and the Central Americans for over 2000 years ago. As you can see, it is a psychedelic mushroom. It is a psychedelic, it causes hallucinations. And the main chemical compound present in this mushroom is the psilocybin. This is the main chemical compound. And it has been tested for its potential against anxiety and different mood disorder. So it is used against treatment of anxiety and mood disorders. So I hope this will give you a brief idea about different hallucinogens from natural origin, also known as the Bhranti Janak Aushadhis. So we have completed cannabis, opium, ergot, dhatura and psilocybe. Let me show you photographs again. This is cannabis, okay, opium, ergot, dhatura and psilocybe. So we have completed the topic hallucinogens from unit number 5. In the last, I acknowledge all the sources that I have used to prepare this video. So this video is intended for education purpose only and no commercialization is involved. In the last and very important information for you guys, there is a channel Knowledge Thrust General Knowledge. There is another important channel of this Knowledge Thrust 02 allied channel, that is the Knowledge Thrust General Knowledge. So you can also subscribe to this channel to see different videos related to the general knowledge of Himachal Pradesh Public Service Commission and HPSSC Hamirpur. In this video, in this channel, you will find different categories and different videos pertaining to the general knowledge, including some of the videos of the pharmacognosy or the pharmacy field. So I hope this is clear. Thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture.